how to write code in Silvaco in my last presentation. Basic overflow of writing code in deck build and build their own structure whenever required. Let's do the first experiment. Design of bulk MOSFET using Silvaco TCAD tool. First write the statement go atlas. Go for the structure. Dimension of the device are shown in this figure. The length of the device is 500 nanometer. Length of the channel is 100 nanometer, 0.2 to 0.3. Length of the source is 200 nanometer, 0 to 200, 0 to 0.2, and the length of the drain is 300 to 500, means 200 nanometer. Oxide thickness 3 nanometer, and the gate work function is 4.6 electron volt. Go for the code. Yes. The meshed space.multi is equal to 1.0. It is a multiplying factor with meshing. First statement in meshing, this one, x.mesh LOC is equal to 0.00 space, SPAC is equal to 0.01. Yes. First statement in meshing, x.mesh LOC represents the location in extraction with spacing 0.01. and x mesh location is equal to 0.20 with spacing 0.0001. This means from x is equal to 0 to x is equal to 0.2, the vertical line spacing is this one, 0.01, and from x is equal to 0.2 to 0.26, the vertical line spacing is 0.0001. Same procedure is adopted for the Y meshing. During meshing, you must take care of that. Ensure adequate meshing density in the high field area, for example, junction area. Avoid abrupt discontinuity in mesh density. Once mesh is specified, every part of it must be assigned a material type. This is done with the reason statement. Reason number must start at 1. You can see that. And are increased for each subsequent reason statement. Reason number 1, material air from x minimum and y minimum 0. If you are not assigning x maximum and y maximum, then it can take the maximum value. In this code, the maximum value in x direction is 500 nanometer and in y direction is 65 nanometer. You can also assign material after the positional parameter. In the y-axis, you have to starting from, you can see in the figure, in the y-axis you have to starting from top to bottom, from 0 to 65 nanometer in y direction. We have to start from the top, from 0 to 65 nanometer. Go for the code. In the second reason statement, material SiO2 is placed at 0.2 to 0.3. This means 200 to 300 nanometer in x direction and 2 to 5 nanometer in y direction. You can see in the figure 200.2 to 0.3 in x direction and 0.0002 means 2 nanometer to 5 nanometer in y direction. 0 to 2 nanometer for the gate electrode. Go for the code. In the reason third statement, silicon material is placed in this particular region from 0 to 200 nanometer in x direction and 5 to 35 in y direction. In the reason fourth statement, silicon is again placed for 200 to 300 nanometer in x direction and 35 to 65 nanometer in y direction. In the next reason statement, silicon material is again placed. Silicon material is placed for all the region, means for the source region, drain region, channel region and the bulk region also. One of the important thing is that if the positional parameter of the new reason statement is overlapped with the previous reason statement,
then the overlap area is assigned as the material type of the new region statement. This means if you are assigning any material for a particular region, if you are assigning the again material for the same region, then the second statement will apply. If you are not assigning the material in all the mesh points in the structure, you will get the error message. Atlas would not be run successfully. Once you specified the region and material statement, define at least one electrode that contact a semiconductor material. This is done with the electrode statement. Electrode name, gate with the positional parameter from 0.2 to 0.3 nanometer in X direction and 0 to 2 nanometer in Y direction, as is seen in the figure. 0.2 to 0.3 in X direction and 0 to 2 nanometer in Y direction. Now I think you have understand how to assign positional parameter for region and electrode statement. And the last one, the final step is to specify the doping in each region. You can specify any analytical doping distribution using the doping statement. Analytical doping profile can be uniform, Gaussian or complementary error function. In this example, I am using the uniform doping for all the region. In the first region, that is the channel region, we are using the uniform doping of 10 to the power 18 p-type concentration for the region 6. We are assigning the doping for every region statement. We can use the positional parameter also. The important thing is that if you are assigning different region for source, channel and drain region, then you can assign region number in the doping statement. If you are using the single region, then you have to assign the positional parameter in place of region number. Next is the interface statement. The interface statement is used to define the interface charge density and surface recombination velocity at interface between semiconductor and insulator. In this example, we are using QF is equal to 3E10. This statement specifies all interface between semiconductor and insulator have a fixed charge density of 3E10 per centimeter square. In many cases, the interface is restricted to a specific region. This can be accomplished with the positional parameter x dot minimum, x dot maximum, y dot minimum and y dot maximum on the interface statement. Once you have defined the meshing, region, material and electrode and doping, then you can modify the characteristics of electrode. If you are not specifying the work function of electrode, then it is assumed as a polysilicon metal contact on silicon. And this contact is assumed to be default to be ohmic. If a work function is defined, then the electrode is treated as a Schottky contact. For example, contact name, gate work function 4.6 electron volt. This is not the Schottky contact because SiO2 is placed between gate and the channel region. Contact name, source and drain is the ohmic contact. Next is model. If you want to study in detail, go for the Atlas manual. I will take a extra lecture on detail of the models used in the Silvaco. I will discuss in brief about model in this lecture. Go for the presentation. This is the physical model. Physical model implemented in Atlas can be grouped into 5 classes: mobility, decombination, carrier statics, impact ionization and tunneling. All models with the exception of impact ionization are specified in the model statement, but the impact ionization is specified in the impact statement. This is the mobility model. Electrons and holes are accelerated by the electric field but lose momentum as a result of the scattering process. So that we must include these models. We can use any of the model: concentration dependent, concentration and temperature dependent, carrier scattering, parallel electric field dependence, Roberti model, CVT model. Next one is the carrier generation recombination model. Carrier generation recombination is the process through which the semiconductor material attempts to return to equilibrium after being disturbed from it. Shockley, Reed-Hall recombination, SRH,
concentration dependent, and the ogle model are used for this carrier generation recombinations model. Next one, impact ionization model. We are using two model. This one is Selbar and the Crowd size model. Impact ionization you can study in the detail. A space charge region with a sufficiently high reverse bias will put the electric field accelerate the free charge carrier. This will, if the electric field is sufficiently high and the distance between the carrier collision is enough to allow the acceleration to high velocity, this will produce the free charge carrier, acquire sufficiently energy before coming in collision with the crystal atom. More free carrier are generated. If the generation rate of free carrier is high, then the avalanche breakdown takes place. In the next model, if you are using the statement model most print, then it will enable these three models. Atlas provide an easy method for selecting the correct model for various technology. The most and bipolar parameter for the model statement are given below. If you are using the model bipolar print, then it will enable these models. The print option in the model statement display the details of the material parameter and the mobility model at the start of the runtime output. Next is the numerical method. Numerical method 1, numerical method 2. They are using the three model in the numerical method. First one is the Gumel, second one is block method, and third one is the Newton method. We will discuss all about the model and the method in detail in the next presentation. To go for the code, a structure file or solution file provide an image of the device at a particular bias point, DC simulation or transient solution point. This file, this .str file, should be plotted using Tony plot. Several quantities are saved by the default within a structure file. For example, doping, electron and hole concentration, potential, electric field. To save these files, the following command would be used. If you want to store different structure parameters, valence band, conduction band, electric field, and many more, you have to use this statement: output, valence band, conduction band, QF and QF, electric field, electron density, electric field in x direction, y direction, mobility, and temperature, and J dot displacement. You must use this command if you want to store these results in the structure file. Next, this one. Atlas can calculate DC, AC small signal, and transient solution. You usually define the voltage on each of the electrode in the device. Atlas then calculate current through each electrode. In all simulations, the device starts with the zero bias on all the electrodes. Solutions are obtained by stepping the bias on the electrode from the initial equilibrium condition to the stepwise voltage. In DC simulation, the voltage on each electrode is specified using this solve statement. Solve initial and solve previous. When no previous solution is accurate, the initial guess for the potential and carrier concentration must be made from the doping profile. This is why the initial solution performed must be zero bias case. This is specified by the statement 0 solve initial and solve previous. The practical result of this is that the first and the second one, non-zero bias solution should have the small voltage step. In this example, we are using the solve B drain 0, 0.1, 0.5 and 1. We cannot move from solve B drain 0 to directly to the B drain 1 volt. Next is log outf, name of the file .log. You can use master also in the statement. Log file store the terminal characteristics calculated by the Atlas. These are current and voltage for each electrode in DC simulation. In AC simulation, the small signal frequency and the conductance and the capacitance are saved. For example, the statement log outf file name is used to open a log file. After the log statement, the terminal characteristics obtained from the solve statement are saved into the file using save outf, this one. Now you can overlay these files using Tony plot.
log file contain only the terminal characteristics. They are typically viewed in the Tony plot. Parameter extraction of data in log file can be done in deck build. One of the important points is to note that generally the unit of current are written in the log file. In Tony plot it is in ampere per micro. Atlas is a two-dimensional device simulator. It sets the third direction to be 1 micron. Thus, if you are comparing your Atlas 2D simulator result with any with the MOSFET results having the width of the device is 20 micron, you need to multiply the current in log file by 20. One of the important more thing you have to note that in the 3D models of Atlas, the width is defined in the 3D structure so that the unit of the current are ampere. In mixed mode, set the width of the device, the current is also in ampere. When cylindrical coordinator are used, the current written to the log file is integrated through the cylindrical and is also in the ampere. This means in 2D structure, the current is in ampere per micron meter. But if you are using the cylindrical device, three-dimensional device, now the current unit is in ampere. This one is AC small signal analysis is performed as a post-processing operation to a DC solution. The result of AC simulation are the conductance and the capacitance between each pair of electrode. Now the result you can view in the Tony plot. Structure file provide all the data from the structure at a single bias point, but the log file provide terminal characteristics for a set of bias point. This means structure file give the data only at a single bias voltage. For example, VGS 1 volt and VDS 1 volt. But the log file provide the terminal characteristics for a number of bias voltage. And after that is quit. If you run the program, you will get this structure file and this is the log file. This one is the log file and this one is the structure file. If you want to export data from the log file, so you have to select this log file and go to the file menu, then save as. Then if you have 4 options to save this file: dat file, net file, raw file and the CSV file. If you want to the data in the Excel form, you have to store it in a common separated value CSV format. Put the any file name, for example result, save in any folder. I will go for T Silvaco code and save the result. A file already exists with the name. Do you want to overwrite? Yes. Then data is stored in the CSV format in the D. Data is stored in the CSV format in this. This is the result one. Open this file. You will get the result. All the data obtained from the log file. If you want to obtain the data from the structure file, first you have to select this structure file, go in the tool, tick on the cut line. You have to select the horizontal cut line and start from this one to this one, this point to this point. Finally you will get all the data. This is the doping. Right click on it, display. You will find all the data: acceptor consultation, composition, energy band diagram, everything you will get. Electric field, potential, you can check everything. Interface charges. For example, I have select potential. Okay, you will get the potential. You can select anything. You can extract the data from the structure file. First you have to store this into the dat file, then you can store it into again CSV format. Okay my dear friends, आज के लिए इतना ही.
Thank you so much. Hello, my dear friend. Welcome to my YouTube channel. In today's presentation, we will talk about Silvaco Basic Introduction. In this presentation, I will talk about basic theory of Silvaco. I will explain everything in Hindi or English language. Before proceeding to this video, you have to follow my previous video also. Silvaco TCAD video 1, video 2 and video 3 for understanding of this video. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं और सिल्वाइको को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको मेरी जो पहली वीडियोस हैं सिल्वाइको टिकट 1, सिल्वाइको टिकट 2 एंड सिल्वाइको टिकट 3 जरूर देखनी चाहिए। अगर आप सिल्वाइको के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते तो मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस और इस वीडियो को ध्यान से सुना तो आप सिल्वाइको टिकट टूल कैसे यूज करते हैं आप अच्छे से समझ पाएंगे। Let's start. Atlas simulation. Silvaco is a device simulation software which is used to obtain device characteristics like IV, CV, etc. for the simulated device, which could be a diode, MOSFET, TFET and organic device. Silvaco एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डिवाइस की करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपेसिटेंस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। डिवाइस कोई भी हो सकता है, इट कुड बी ए डायोड, मोसफेट, टीफेट, ऑर्गेनिक फेट एंड नैनोवायर। Silvaco International produce a suite of software programs that together become a virtual wafer fabrication tool. Silvaco एक कंपनी है जो हमें डिफरेंट टूल प्रोवाइड करती है जैसे एटलस, अथीना एंड विक्ट्री प्रोसेस। इन सबका कॉम्बिनेशन एक फैब्रिकेशन वर्चुअल फैब्रिकेशन टूल बनाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी फैब्रिकेशन लैब को सेट करने में करोड़ों रुपए लगते हैं तो हम बिना लैब को सेट करे वर्चुअली इस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक सॉफ्टवेयर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रपोज डिवाइस है उसकी कल को अगर वो फैब्रिकेट होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखेंगी, करंट कितना आएगा, वोल्टेज कितना आएगा, आप उनकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी कॉस्ट ऑफ द डिवाइस। Silvaco Incorporated is a private owned company. It will be provide electronic design automation software, TCAD process and device simulation software. Silvaco एक प्राइवेट कंपनी है जो हमें डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, TCAD processes and device simulation software, Atlas, Athena, Victory process, just like that. In this presentation, we will talk about Silvaco Atlas. Atlas is a software program used to simulate 2 and 3 dimensional semiconductor devices. हम अपनी प्रेजेंटेशन में आज एक एटलस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। इस एटलस सॉफ्टवेयर का जो यूज है वो 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल डिवाइस को सिमुलेट करने के लिए किया जाता है। डिवाइस कोई भी हो सकता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑर्गेनिक फैट, नैनोवायर डिवाइस, डिवाइस कोई भी हो सकता है, चाहे वो 2 डिमेंशनल में हो चाहे वो 3 डिमेंशनल। Silvaco provides analog semiconductor process, device and design automation solution in CMOS, bipolar, silicon germanium and compound technology. Silvaco हमें और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम इसके सेमीकंडक्टर प्रोसेस को समझ सकते हैं, इचिंग, आयन इम्प्लांटेशन एक्सेट्रा। हम डिवाइस को प्रॉपर डिजाइन कर सकते हैं इसमें कि डिवाइस आफ्टर फैब्रिकेटेड दिखेगा कैसे। इसमें हम कंपाउंड डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं, हेटेरो जंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। TCAD products. Today, much of the development of semiconductor devices and processes is done by computer modeling. This approach is called TCAD. आज की डेट में सभी जो डिवाइस की डेवलपमेंट है और प्रोसेसेस है वो कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू की जाती है। जब हम डिवाइस को
फैब्रिकेट ना करके एक वर्चुअल फैब्रिकेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसको हम TCAD कहते हैं। TCAD की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। Technology computer aided design is a branch of electronic design automation that models semiconductor fabrication and semiconductor device operation. TCAD सॉफ्टवेयर से हम दो मॉडल डिजाइन कर सकते हैं, एक तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मॉडल, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस ऑपरेशन। एक तो कि हमारा डिवाइस दिखेगा कैसे, उसका स्ट्रक्चराइज क्या होगा, एक उसकी लोग कैसे, उसके आउटपुट कैसे, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपेसिटेंस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। The modeling of the fabrication is termed as process TCAD. अगर आप डिवाइस को फैब्रिकेट करते हैं, वर्चुअली फैब्रिकेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम प्रोसेस TCAD कहते हैं। While the modeling of the device operation is termed as device TCAD. अगर हम उसका एक पीछे का एक मॉडल प्रोसेस डिजाइन करते हैं तो हम उसको डिवाइस TCAD कहते हैं। Process simulation. Athena is a group of process simulation products that enable process and integration engineers to develop and optimize semiconductor manufacturing processes. Athena provides a platform for simulating ion implantation, diffusion, etching, deposition, lithography, oxidation of semiconductor material. It replaces costly wafer experimental with simulation to the virtual fabrication tool. We can use two software, Athena 1D or 2D process simulator and Victory process. तो Athena हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम डिवाइस को बिना फैब्रिकेट करे, जो डिवाइस के फैब्रिकेशन में जो प्रोसेस हैं उसको वर्चुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे फाइन इम्प्लांटेशन, डिफ्यूजन, एचिंग. यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन द सॉफ्टवेयर कॉल्ड Athena. इससे हमारा जो पोस्ट प्रोडक्शन है, जैसे हमें कोई इसके लिए फैब्रिकेशन लैब नहीं सेट करनी पड़ी जिसमें हमारा करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता, तो हम उसको वर्चुअली फैब्रिकेट करके देख सकते हैं. नेक्स्ट है डिवाइस सिमुलेशन. Atlas is a group of device simulation product enables device technology engineers to simulate the electrical, optical, and thermal behavior of the semiconductor device. It provides a physics-based, modular, and extensible platform to analyze DC, AC, and time domain responses for all the semiconductor-based technology in 2D and 3-dimensional device. जब हमने अपने डिवाइस को स्ट्रक्चराइज कर लिया, हमने एक डिवाइस का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया, अब हमने उस डिवाइस को सिमुलेट करना है. अब हमें उसकी कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है कि आफ्टर फैब्रिकेट डिवाइस की आउटपुट क्या होगी, उसका ऑन ऑफ करंट क्या होगा, अब थ्रेशोल्ड फॉल ऑफ क्या होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगी. ये सभी हम डिवाइस सिमुलेशन के थ्रू देख सकते हैं. नेक्स्ट इज द इनपुट फाइल स्ट्रक्चर. Silvaco Atlas receives इनपुट थ्रू डेक बिल्ड. हम Silvaco Atlas को जो इनपुट देते हैं वो डेक बिल्ड में कमांड के थ्रू देते हैं. The code entered in the input file calls Atlas to run with the following command. अगर हमें डेक बिल्ड में कोई कमांड लिख के Atlas को कॉल करनी है तो उसके लिए हम go Atlas कमांड का यूज करते हैं. Following that command, the input file needs to follow a pattern. The command groups are listed below. After the go Atlas, you have to follow some command. आपको कुछ commands को follow करना पड़ेगा डिवाइस को सिमुलेट करने के लिए. वो commands क्या हैं? Structure specification command, material model specification command, numerical method selection command, solution specification, and result analysis. In structure specification, you have to follow a pattern. First, you have to define the meshing. Second, you have to define the region statement. Third, you have to define the electrode. Fourth, you have to assign doping the particular region. And after that, you have to define material model specification, in which you have to define new material. You have to define models that is required to implement for a particular device, context statement, interface statement. After that, you have to define some method to do the calculation of linear or non-linear or quadratic equation. Next, solution specification, you have to define the log statement, solve statement, load and save. And for the result and analysis, you have to use two command, tonyplot and the extract command. Simple. आपको क्या करना है,
कि पहले तो आपको टाइप करना है गो एटलस कमांड। चलो हम फर्स्ट उसको टाइप करते हैं। हम एक डबल गेट मोसफेट डिवाइस डिजाइन कर रहे हैं। इसके लिए हमने ये फर्स्ट कमांड दे दी गो एटलस। इसके ऊपर हमने डिफाइन किया है डबल गेट। इसके आगे हमने हाइफन का निशान शो किया है। इससे क्या होगा कि जब हम डिवाइस को सिमुलेट करेंगे तो अगर हमने ये निशान हाइफन का निशान यूज किया है तो वो इस लाइन को सिमुलेट नहीं करेगा, वो इसको स्किप कर देगा। जहां भी तुम ये निशान मेंशन करोगे, हाइफन का निशान मेंशन करोगे, वो उस लाइन को सिमुलेट नहीं करेगा, उसको एज ए इंस्ट्रक्शन कमांड लेगा। जैसे आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जैसे मैंने ये इंस्ट्रक्शन दी है, ये जो कोड है वो डबल गेट का है, तो सिल्वाइको इस लाइन को, इस कमांड को सिमुलेट नहीं करेगा, इसको स्किप करेगा। जहां हमने ये आइकन यूज नहीं किया उस कमांड को सिमुलेट करेगा। तो सबसे पहले हमने टाइप कर दिया गो एटलस। आफ्टर डिफाइनिंग द गो एटलस को डिफाइन करने के बाद आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। आपको ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कमांड्स फॉलो करनी है कि आपको पहले ये मैशिंग डिफाइन करनी है, उसके बाद रीजन, इलेक्ट्रोड, डोपिंग, मटेरियल, मॉडल, कॉन्टैक्ट, इंटरफेस, मेथड, लॉग। आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मैशिंग से। द रूल ऑफ डिफाइनिंग द मैशिंग सिंटेक्स। एन इनपुट डेक लाइन इज रेफर टू एज ए स्टेटमेंट। हम कोई भी डेक फील्ड में कोई भी हम लाइन डालते हैं वो एज ए स्टेटमेंट लेगा। जैसे हमने पहली कमांड डाली गो एटलस। सिंस स्टेटमेंट एंड पैरामीटर्स आर नॉट केस सेंसिटिव। जैसे हम पहले कोई स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, जैसे हमने डिफाइन करी गो एटलस, तो ये जो स्टेटमेंट है ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसको अपर केस लेटर में भी टाइप कर सकते हैं और लोअर केस लेटर में भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपने गो एटलस लिखा है तो आप इसको अगर कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अगर लोअर लेटर में लिखेंगे तो भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। दे कैन बी एंटर्ड यूजिंग आइदर अपर केस और लोअर केस लेटर। Atlas follows the following format for statement and parameter. A statement is specified in the general format. हमने जनरल फॉर्मेट में स्टेटमेंट को डिफाइन किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, देन इट्स पैरामीटर, देन इट्स वैल्यू। मैंने आपको पहले ही बता दिया जो स्टेटमेंट्स और पैरामीटर है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप उसको अपर केस या लोअर केस में डिफाइन कर सकते हैं। द स्पेस कैरेक्टर इज यूज्ड टू सेपरेट द पैरामीटर इन ए स्टेटमेंट। आपको बीच में स्पेस जोड़ देना पड़ेगा। जैसे आप मैशिंग डिफाइन करते हैं तो एक्स मैश आप लिखोगे, जब उसकी स्पेसिंग डिफाइन करोगे तो आपको बीच में स्पेस देना पड़ेगा। द स्पेस कैरेक्टर इज यूज्ड टू सेपरेट द पैरामीटर इन ए स्टेटमेंट। जो हम बीच में स्पेस देंगे वो स्टेटमेंट को पैरामीटर से अलग करेगा। टू डिफाइन ए डिवाइस थ्रू द एटलस कमांड लैंग्वेज यू मस्ट डिफाइन ए मैश। दिस मैश और ग्रिड कवर्स द फिजिकल सिमुलेशन डोमेन। आपको जितने एरिया में डिवाइस को डिजाइन करना है आपको उतने एरिया में मैशिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। मैशिंग क्या है? सिंपली कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉम्बिनेशन है जो एक ग्रिड बनाएगा जहां आप अपने डिवाइस को डिजाइन कर सकते हैं। स्पेसिफाइंग द इनिशियल मैश, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैशिंग। एक्स मैशिंग और वाई मैशिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें डिफाइन करना है मैश स्पेस डॉट मल्टी is equal to value. The value may be 1, less than 1 or greater than 1. Normally we are using the value 1. Let's go to the code. हमने यहाँ mention किया है mesh space dot multi is equal to 1. अगर हम ये यहाँ value 1 assign करते हैं तो ये 1 जो multiply होगा spacing से, तो 0 से लेके 0.005 तक जो spacing होगी वो 0.01। अगर आप यहाँ मेंशन करते हैं 0.5 तो मैशिंग और फाइन हो जाएगी, इसकी वैल्यू और लेस हो जाएगी, इसकी वैल्यू रह जाएगी 0.005। अगर आप इस वैल्यू को डिक्रीज करते रहते हैं तो मैशिंग को फाइन करते रहेंगे। अगर आप इसकी वैल्यू को 1 रखते हैं तो सेम मैशिंग सेम स्पेसिंग अप्लाई होगी डिवाइस पे। अगर आप इसकी वैल्यू को ग्रेटर देन 1 करते हैं तो आप मैशिंग को फोर्स करते जाएंगे। बेटर है हम इसको 1 रखें और यहाँ सेम मैशिंग अप्लाई करें। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं अगर मैंने इसकी वैल्यू को 1 रखा है तो मैशिंग ऐसी है। अगर मैं इसकी वैल्यू को 0.5 कर दूं तो मैशिंग और फाइन हो जाएगी। तो अगर जो पहले डिफरेंस था तो वो 0 से लेके 1 तक था, अब आपने किया तो 2
और वर्टिकल लाइंस डिफाइन हो गई। यानी अगर आप मैशिंग को लेस देन 1 करते जाएंगे तो आप मैशिंग को फाइंड करते जाएंगे, अगर आप इसको ग्रेटर देन 1 करेंगे तो मैशिंग को कोर्स करते जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? ओके, वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. First statement is structure specification. The structure specification is done by defining the mesh, the region, the electrode and the doping level. In the structure specification हमें पहले meshing को define करना पड़ेगा, फिर region को define करना पड़ेगा, फिर electrode को, फिर doping level को. This is followed by a series of X mesh और Y mesh statement. मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये मेंशन किया है कि X mesh dot location, आप LOC भी लिख सकते हैं और आप कंप्लीट लोकेशन भी लिख सकते हैं. Start from the -250 and end at the 250. You can see that the x-axis is start from the -250 from that point. This is 200 -250